Hello and welcome to the next lecture. Today we start with a new chapter, that is HPLC, also called as a high performance liquid chromatography, or we can say high pressure liquid chromatography. So here we can get pressure, we can get performance. So everything can be done in this liquid chromatography, which is differ from gas chromatography. How it differ? Because in the case of gas chromatography, the mobile phase that we are using is nothing but gas. But in the case of this GC, instead of GC, it is LC. LC means what? It is a liquid chromatography. So liquid means what? The mobile phase is liquid that we are using in this case. Okay. So mobile phase हमारा liquid है, and that we can done with the high pressure we are applying. In the case of GC, we never require because that is gas that can easily travels. But here, in this case, there is a liquid which we have to be travels. हमें हमारे पास क्या है, लिक्विड है, उससे हमें ट्रैवल्स करना है. So there is a certain changes takes place between the GC and between the HPLC. So in this today's lecture, we are doing the separation of the components by the use of high pressure oblique performance liquid chromatography. Okay, so in this chapter, we have to study about what is basic HPLC. In short, there is an advantage of the HPLC, types of HPLC. Up to the types, there is a theory part. So in the case of theory, just remember that one. It is similar to gas chromatography that we have already covered. So both the theories are common. So we have to utilize that theory. We are not concluded or conducted this theory part in this lecture. So prefer the old one. And then instrumentation. So in the case of instrumentation, there is an whatever the liquids are there that we are using in the case of mobile phase. So there is an liquid we have to store in the particular, that is called a solvent reservoir systems. In this we have to know the solvent reservoir, then the inlet filter, then the degasser that we have to learn. And after that we have to learn about the after this whatever the solvent are there that degassing, then there is a pressure pump, reciprocating pump, pressure pump, displacement pump, syringe pump, pneumatic pump, constant pressure pump. Okay, there are the three types. So there is other name to this one. Okay, so that are the kind of pumps that we are using. After the pumps, then it go toward the columns. So there are the columns are their classification: analytical column, preparatory columns. So in this case, there is we have to know about the short column, short and fast columns, narrow bore column. So inside bore is very narrow. Okay, there is another one, radial compression columns also there. Okay, so there is a compression is allowed over the to the surface, and through which there is a movement takes place. Even after that, we have to be study about the detectors. Okay, after the columns, there is an we just want to be know about the stationary phase, whatever the kind of stationary phase, what is the role of the stationary phase, how it is prepare. And then we have to know about after the that, then there is a detector. So mostly bulk property detectors, solid property detectors, in which we have to know about the uh, RI detector. So we have to know the refractive index of that particular substance, how much changes it going to be takes place. That with the standard we have to compare with the samples that we have to know. Okay, so that is the bulk property detector. And solid property detector, there is UV detectors, fixed wavelength, variable wavelength, polarimetric detector, electrochemical detectors, and so many kinds of detectors are there that we are used in the case of the analysis of the substance. Okay, and finally we have to know about the what are the applications of HPLC. So these are the whole things we have to be studied in the case of high performance or high pressure liquid chromatography. So we start with the today's lecture, and we have to know about the objective of today's lecture. So we have to know a few of the points that we have to be cover. That is to study the basic introduction. So what exactly is HPLC? That we have to know with the basic introduction. Then to understand the principle and types of HPLCs are there. Various types of HPLCs are there that we have to be know, and to know the theories of the HPLC. Okay, even in the in this case we have to add the particular points like
how to analysis of the substance, how to separation takes place. That isn't added to the objective, but that we have to be know in the case of this objective of the HPLC. So we start with the first point, that is an introductory part, where as we are that thing which can't be studied in the case of GC, we can study thermally volatile compound as well thermally stable compounds. Unstable compound also can be studied volatile components. So that is a not necessary thing. In the case of GC, that is a limitation that less volatile compound can be studied. But in the case of the HPLC, we can study any kind of the compounds. हम कौन से भी kind के compound इसमें study कर सकते हैं. Okay. So HPLC stand for high performance liquid chromatography, sometimes referred as the high pressure liquid chromatography. That is the common thing that I told to you. Then high performance liquid chromatography is a powerful analytical tool. Okay, it yield high performance and high speed compared to the traditional column chromatography. अब जो column chromatography थी traditional, उससे तो far more better. Okay, because of the forceability. So our force will be there is a movement of that whatever the volume of the liquid, or also called as mobile phase are there. Okay, mobile force will be pumped mobile phase, so that mobile phase through the particular pressure that we are applying, that why there is a movement of the mobile phase takes place. Okay, so HPLC is a chromatographic technique. HPLC क्या है? It is an chromatographic technique that can be separate a mixture of compounds. It can separate. ये क्या करता है? HPLC separate the mixture of compounds. Okay, it is used in biochemistry. Okay, not in just biochemistry, analytical chemistry. Okay, food industries. The in anywhere in the pharma industry there is use of HPLC. Okay, to identify, not only identify, quantify, to make it quantify. So to HPLC is that is separate the mixture of the components. Separation means mostly adsorption type of chromatography. Separation takes place on the basis of the process of adsorption. Okay, that we study in the case of principle. But just remember that one. Hyperliquid chromatography is powerful tool to analysis, yield high performance and high speed compared to the traditional columns. Okay, then mixture हम separate करते हैं. Then as I told to you, biochemistry or everywhere mostly quantify, purify हम करते हैं, means individual component में हम उसका separation करते हैं. Okay, so that thing is the introductory part. Okay, then in the case of chromatography, it is a physical method in which separation of the component takes place between the two phases. हम क्या करते हैं? Separation of the components takes place. So there is a separation किस किस में होता है? Two phases are there. That is stationary phase and mobile phase. उनके बीच में हम क्या करते हैं? Component का separation करते हैं. Okay. So stationary phase, the substance on which adsorption of the analyte, the substance on which adsorption of analyte, the substance to be separated during the chromatography takes place. Okay. To which adsorption of the analyte. So it can be solid, a gel, or a solid liquid combination. It can be anything. Okay, might be solid, might be gel, or solid liquid combination. And whatever the kind of mobile phase are there, that is purely a liquid. Okay, so solvent which carries analyte, a liquid or a gas. Might be gas are there, but mostly in the case of this one, liquid is the mobile phase we are preparing. Okay, so HPLC is a type of liquid chromatography. HPLC क्या है? A type of liquid chromatography where the sample is forced through a column. हम क्या करते हैं? Liquid chromatography where the sample is forced through a column. हम force क्या करते हैं? Sample पे. That is a pack with the stationary phase. Okay, so sample हम force करते हैं जो column के साथ pass होने के लिए, that is a pack with the stationary phase composed of irregular means that is not regular size, or a spherically shaped particles. They might be consist of an particles, a porous monolithic layer, mono means single lithic layer, or a porous membrane of the liquid mobile phase at a high pressure. Okay, so that thing is going to be done with the passings of this one. Okay, and then there is an advantages are there. So simply इसमें हमने क्या बोला introductory में,
जस्ट व्हाट इज द रोल ऑफ द एचपीएलसी सेपरेशन हम करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। देन क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि सेपरेशन होता है जहाँ पे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज यूज़ करते हैं। स्टेशनरी फेज क्या है, एक जगह पे स्टेबल होता है, ओके, और उसमें से एनालाइट हम पास करते हैं। मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट विच कैरीज द एनालाइट, ठीक है, मोबाइल फेज एनालाइट को कैरी करता है। और इसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वेयर द सैंपल इज पोस्ट थ्रू द कॉलम दैट इज पैक्ड विद द स्टेशनरी फेज कंपोज ऑफ irregular spherically shaped particles, porous non-ethylene, okay, monoethylene layer or a porous membrane by a liquid that is mobile phase at a high pressure. So now there are advantages. What are the advantages? It is a simple, rapid and reproducible. It is a simple technique. Rapid means बहुत जल्दी separation मिलता है. Reproducible, we can get the multiples of the result at the same reality. It's highly sensitive. Sensitive technique. High performance means performance is very good, highly uh, preferential one. Rapid process and hence time saving. It is rapid because we are applying the pressure. That's why the separation takes place at a rapid rate, and that's why we are avoiding the loss of time while the analysis. It is having a high resolution. Resolution is very high, and separation capabilities. Okay, again the same accuracy, precision means we get the same result, nearly about the same result in multiples of times we are taking the reading, and accuracy means the exactly the same kind of reading that we are expecting. Stationary phase was chemically inert. Okay, what is the kind of stationary phase that we are using? That must be inert. Okay, हम non inert रहेगा तो that may affect our results. That's why we are preferring the inert one. The sample must be inert one. Okay. So, and wide variety of stationary phase. We are using the different kinds of varieties of the stationary phase. Okay. Mobile phase was chemically inert. Mobile phase also chemically inert. वो भी react नहीं करना चाहिए. Less requirement of mobile phase in developing chamber. हमें क्या चाहिए? Less requirement of mobile phase. बहुत कम से कम अमाउंट के मोबाइल फेज पे हमें क्या करना है कि सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है. ओके, अर्ली रिकवरी ऑफ द सेपरेट कंपोनेंट्स. Okay, early recovery of the separate component, easily visualizations of the separated component. It is having a good reproducible and repeatability. Then it is an analytical technique. अब कुछ point तो visualization separated component. So visualization is not in the case of this one. Visualization is done by the computer. हमें graph मिलता है, so we can done with the visualizations. Good reproducible repeatability. So reproducible result है, repeatability है, means continuously हमें same result मिलते हैं. It is an analytical technique. It is important for the validations of a product. Okay, quality control studies of product. So QC studies, validation we can study in this case. It is important for qualitative. So we can check the quality of the products, and quantitative means amount of the products that can be studied in the case of this one. And it is used for both analytical and preparative purpose. हमें ये analytical के लिए भी काम आता है और preparative करने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं. So that are the whole are the advantages. उसमें से ये जो है कौन सा ये वाला, that is part of the liquid chromatography. Simple चेम्बर्स प्रिपेयर करने, हम इसमें चेम्बर तो नहीं करने वाले, कॉलम रहता है उसमें सेपरेशन करते हैं. So that point is omitted from this one. Remaining is can be accepted. Okay, now moves towards the principle of HPLC. So in the case of HPLC, to understand the principle of HPLC, we must first look the principle behind liquid chromatography. LC में हमने pressure means principle study किया था, वैसे ही है. So liquid chromatography is a separation technique that involves, okay, तो ये क्या है, एक separation technique है which involves the placement of injection of the small volume of the liquid sample. Placement क्या करते हैं, through the injection the small volume of the liquid sample into a tube packed with the porous particles. Okay, that is called stationary phase, means inside the columns that we are placing into a tube packed with the porous particles, stationary phase, where the individual components of the sample are transported along the packed tube. Okay, where individual components of the sample are transported along the packed tube by a liquid moved by gravity. So we can separate individual components of the sample are transported along the packed tube by a liquid moved through gravity. Okay, so the main principle of the separation is adsorption. So already we have know that adsorption type of chromatography. Again, I am repeating, where the individual components of the sample are transported along the packed tube, that is column, by a liquid moving by gravity,
we are moving that liquid by the pressure. Okay, the main principle is adsorption. So simply partition का काम नहीं, यहाँ पे adsorption is the mainly preferable. So when a mixture of components, जब हम क्या करेंगे, when a mixture of component are introduced into the column, हमने इसको column के अंदर introduce कर लिया. So various chemical and or a physical interaction takes place. किस किस क्या होगा उसमें, chemical और physical interaction, physical and or physical interaction takes place between the sample molecules and the particles of the column packing. Okay, so sample molecule and the particles of the column packing, उनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन होने लगेगा. ओके, सो जैसे इंटरेक्शन होगा, एज वी आर नोइंग दैट वन, सिंपली हमने ऑलरेडी एक बार स्टडी किया है. तो हमने क्या किया था कि जस्ट टेक द, सपोज ये आपके पास ऐसा कॉलम है, ठीक है, हम यहाँ से आपका क्या आ रहा है, आपका ये एनालाइट इसमें से आ रहा है. सेपरेशन हमें पूरा स्टडी करना है विद डायग्रामेटिक, आई विल एक्सप्लेन दैट वन. तो यहाँ पे एनालाइट आ गया, ठीक है. Suppose this one is a one analyte is there. Okay, then here is an another analyte is there. So here is an mixture, and alongside to this one, इस साइड पे क्या है आपका, या ऐसा, इधर भी एडजॉर्बेंट है, इधर भी एडजॉर्बेंट है. तो दोनों साइड के सरफेस पे आपके क्या थे, एडजॉर्बेंट प्लेस है. तो हमने क्या किया है, सिंपली सिंपल केस में, अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो आपका जो है ना सेपरेशन मीन्स, अब ये इट इज हैविंग अ लेस एफिनिटी विद द सब्सटेंस, या एब्जॉर्प्शन इसका लेस हो रहा है, तो ये सब्सटेंस यहाँ पे सेपरेट हो गया. एंड इफ यू स्टडीड विद दिस वन, इट इज हैविंग एंड सर्टेन एफिनिटी, इसके पास थोड़ा सा एफिनिटी है, तो ये यहाँ तक पहुँच गया, बिकॉज इट इज शोइंग सर्टेन एफिनिटी. ठीक है, इसकी एफिनिटी है, इसकी नहीं है. तो इसकी एफिनिटी की वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा ऊपर रह गया, अट्रैक्टेड टुवर्ड द सरफेस बिकॉज ऑफ द एडजॉर्बेंट आर प्रेजेंट. इसमें एफिनिटी नहीं है, डजंट शो द अट्रैक्शन टुवर्ड द सरफेस, दैट्स वाई ये थोड़ा जल्दी से नीचे आ रहा है, थोड़ा लेटली आ रहा है. और फाइनली क्या हो जाएगा कि दिस इज रीच एट द बॉटम, सबसे पहले ये बॉटम में रीच हो जाएगा, और तब तक क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे पहुंचेगा. क्यों? Because there is an attraction takes place, this component gets separated out, ejected out first, and later who is showing the adsorption, that gets separated out. So that is nothing but the principle. Okay, so that thing we are explaining, that they travel according to their relative affinities toward the stationary phase. अब ये रेड और ग्रीन है, दोनों एग्जाम्पल लिए थे, तो इसमें से एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है, रेड की या ग्रीन की. ऑल्दो वी नो दैट देयर इज रेड इज हैविंग मोर एफिनिटी, ग्रीन इज हैविंग लेस एफिनिटी. इसकी वजह से क्या हो गया, रेड एड्सॉर्ब हो रहा है सरफेस, ग्रीन नहीं हो पा रहा है. ओके, सो which is having a more affinity toward the adsorbent travels slower, तो उसकी वजह से ये ट्रैवल स्लो होने लगा. ठीक है, एंड द कंपोनेंट इज हैविंग अ लेस एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज ट्रैवल फास्टर, तो ये फास्ट ट्रैवल करने लगा. ओके, सिंस नो टू कंपोनेंट्स हैव द सेम एफिनिटी, दोनों कंपोनेंट की कभी भी सेम एफिनिटी नहीं होगी. ओके, टुवर्ड स्टेशनरी फेज एंड द कंपोनेंट आर गेट सेपरेट आउट, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं. So HPLC is a separation technique that involves the injection of a small volume of the liquid into a tube packed with the tiny particles, that is 3 to 5 microns, in a diameter called as a stationary phase. So where the individual components of the sample are moved down the packed tube columns with the liquid mobile phase forced through a column by a high pressure delivered by a pump. अब इसी चीज में अब ये जो है आपका प्रिंसिपल ही हो गया. ठीक है, सो हाउ द HPLC the separation is the separation technique involves. ओके, हमने इंजेक्शन थ्रू यहाँ पे हमने सैंपल इंट्रोड्यूस कर लिया, स्मॉल वैल्यूम ऑफ द लिक्विड सैंपल्स 3 to 5 माइक्रोन मीटर्स, डायमीटर कॉल्ड स्टेशनरी फेज. सो वेयर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल मूव डाउन द पैक, सो ये जो है ना, ये और ये मूव होने लगे, ये इंडिविजुअल होने लगा, ये भी इंडिविजुअल होने लगा, कॉलम्स और रिमूवल फेज फोर्स थ्रू अ कॉलम बाय हाई प्रेशर डिलीवर्ड बाय अ पंप. और ये क्या होता है, इट इज़ अ वेरी क्विक टेक्निक, और प्रेशर अप्लाई करने के बाद इसमें से ये मोबाइल फेज ट्रैवल होने लगता है, और उसके साथ आपके एनालाइट्स भी ट्रैवल होने लगते हैं, और उनका हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं. सो दैट थिंग इज नथिंग बट द प्रिंसिपल. आई होप यू आर गेटिंग दिट विद प्रिंसिपल्स. ओके, तो वही चीज इसमें
प्रिंसिपली हमने स्टडी की है। ओके, सो दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। हमने क्या है, these components are separate from one another by a column packing that involves the various chemical and physical interaction between their molecules and packing particles. हमने वही स्टडी किया था, there is interaction between the molecules and the packing particles. So these separated components are detected at the exit of the tube. So अगर हमने वैसे स्टडी किया था कि ये ट्यूब है, तो एक कंपोनेंट पहले आ गया, एक दूसरा कंपोनेंट यहीं पे रह गया, तो क्या होता है, दिस सेपरेट कंपोनेंट्स आर डिटेक्टेड एट द एग्जिट ऑफ द ट्यूब। एक कंपोनेंट हम पहले डिटेक्ट करेंगे, बाद में इस कंपोनेंट को डिटेक्ट करेंगे। सो दिस कंपोनेंट्स, ओके, एग्जिट ऑफ द ट्यूब कॉलम बाय अ फ्लो थ्रू डिवाइस डिटेक्टर दैट मेजर देयर अमाउंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे डिटेक्टर हमने इस डायरेक्शन में रखा है और इस ट्यूब से बाद में ये सैंपल आपका इधर आ गया। सो फ्लो थ्रू डिवाइस डिटेक्टर दैट मेजर देयर अमाउंट, ये क्या करेगा, डिटेक्टर अमाउंट मेजर करेगा। द आउटपुट फ्रॉम डिटेक्टर इज कॉल्ड एज अ लिक्विड क्रोमैटोग्राम। जो आउटपुट मिलेगा आपको उसको बोलते हैं हम लिक्विड क्रोमैटोग्राम। और इन प्रिंसिपल LC एंड HPLC वर्क द सेम वे। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, ओके, that is a thin layer chromatography, works same with the HPLC, work the same way. Expect the speed, efficiency and sensitivity in the case of operation HPLC is vastly superior. LC और HPLC के प्रिंसिपली सेम ही है, दोनों वर्क भी नियरली अबाउट सेम ही कर रहे हैं। चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं कि इसकी स्पीड, इसकी इफिशियंसी, इसकी सेंसिटिविटी और ऑपरेशन, इजी टू ऑपरेशन ऑफ HPLC इज वार्सली सुपीरियर, बहुत ही अच्छा है लिक्विड क्रोमैटोग्राफी से भी। सो दैट थिंग वी हैव टू बी स्टडीड in the case of this one. So this one is an part. Then types of HPLC. Okay, I think you are getting with the principle of HPLC. Up till now, that whole part is nothing but the whatever the principle of HPLC. Now there is a types of HPLC. So based on the modes of separation, normal phase chromatography and reverse phase chromatography. एक चीज याद रखना है, ओके, कि सबसे ज्यादा हम रिवर्स फेज पे स्टडी, 99% जो रिजल्ट एनालिसिस होता है रिवर्स फेज पे होता है। ओनली 1% आर देयर दैट वी आर यूजिंग फॉर द नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी। अब वहाँ पे क्या होता है, स्टेशनरी फेज इज पोलर, दैट इज द हाइड्रोफ्लोरिक, और इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स व्हाट, बेंजीन इज देयर, डाइक्लोरोमीथेन और बहुत सारे जो नॉन पोलरिक है वो हम इसमें यूज करते हैं। और इस केस में क्या होता है, मोबाइल फेज इज पोलर, हाइड्रोफ्लोरिक मीन्स वाटर वी कैन यूज, देन ACN, what is my ACN, that is called acetonitrile, then we can say methanol. So such a kind of solvent that we are using. So polar bands and non-polar bands have more affinity than the polar non-polar bands. Okay, मोर एफिनिटी किसमें, पोलर बैंड के इसमें रहेगी, अदरवाइज नॉन पोलर बैंड्स में रहेगी, है मोर एफिनिटी देन द पोलर एंड नॉन पोलर बैंड्स। ओके, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव indicating that one, that reverse phase chromatography is more commonly used as a drug, are usually hydrophilic, मीन्स वाटर लविंग रहते हैं। क्योंकि हमारा, हम कुछ भी स्टडी करें, डिजो लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो वाट एवर वी आर यूजिंग द वाटर, और हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है, वाटर का है। तो ड्रग किसके अंदर डिजोल्व होगा, वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, और उसकी वजह से हमें उसका स्टडी करना पड़ता है। दैट्स वाई वी आर प्रिफरिंग द रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी rather than the normal phase. There might be question asked to you, why there is a prefer reverse phase chromatography than the normal phase. So simply answer is what? Because reverse phase chromatography is more commonly used because drug are usually hydrophilic. आपकी जो कौन सी भी ड्रग आप स्टडी करो, मैक्सिमम ड्रग कौन से हाइड्रोफिलिक है और दे आर dissolved in a particular water. So in the case of this one, they can get separated out and we can done easily the analysis. That's why we are using the reverse phase chromatography. So that is based on the modes of separation. ये जो है पहला टाइप हो गया. Then the next one, second type, based on to the elution technique, isocratic, okay, or second is a gradual. Iso means one word, remember, same. Iso means what? Same. Isocratic means same. So what we are doing, suppose सिंपलेस्ट वे से बोल रहा हूँ, आपके पास क्या है, एक जार है, ठीक है,
इसके अंदर आपने इस लेयर तक, इस लेवल तक, ये जो है ना पहला, ये आपने वाटर ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास दूसरा ये है। ठीक है, इस लेवल तक हमने क्या किया है, एसीएन ऐड कर लिया, एसी एन ऐड कर लिया इसके अंदर। ठीक है, सपोज दिस वन इज दिस एसीएन इज 50%, और ये जो वाटर है, वाटर कितना है, 50%। सो वी कैन टेक द बोथ द सैंपल्स, एक ही जार है, एक ही जार के अंदर हमने क्या 50% वाटर लिया, 50% एसीएन लिया। ओके, सो अब हम इसका एनालिसिस कर पा रहे हैं, लेकिन क्या होगा, हमें इसमें से वाटर कंटेंट कम करना है और एसीएन बढ़ाना है। सो दैट इज नॉट इन द केस ऑफ दिस वन। हमने 50% ले लिया, मीन्स 50 ml, सपोज हमारे पास 100 ml है, 100 ml का टोटल अमाउंट है, इसमें जो 50 ml वाटर ले लिया 50 ml से, अब हमें चेंज करना है। सो सेपरेशन विच मोबाइल फेज कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपका मोबाइल फेज हो गया, ये हो रही, दैट कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ऐड कर लिया। थ्रू आउट द प्रोसीजर टर्म आइसोक्रेटिक इल्यूशन, हम इसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक। सो इन आइसोक्रेटिक इल्यूशंस पीक विद इंक्रीज, इनके जो विद होती है इंक्रीज विद रिटेंशन टाइम, okay, linearly with the number of theoretical bits. This lead to disadvantage that the late eluting peaks get very flat and broad. Okay, एक तो ये बहुत फ्लैट हो गए, ऐसे प्लेन होने लगेगी, ऐसे फ्लैट और ब्रॉड, तो उसकी वजह से ये ब्रॉड भी होने लगेगी। ठीक है, सो दैट थिंग इट इज हैविंग अ ब्रॉड और इट इज हैविंग अ फ्लैट। ओके, सो linearity with the, so elution peaks with increase with the retention time linearly with the number of theoretical plates. So best for the sample simple preparations or simple separations. Okay, so this is the best technique. Often used in a QC applications that support and are in close product proximity to a manufacturing process. So that thing is case of the isocritic elutions. Okay, सो दैट इज अबाउट द आइसो, मीन्स सिंपली एक ही जार के अंदर हम दो ऐड कर सकते, इसमें से उसको कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द आइसोक्रेटिक इल्यूशन, हम बोलते हैं इसको आइसोक्रेटिक इल्यूशंस। नाउ द सेकंड वन इज द ग्रेजुअल इल्यूशंस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सपोज ये आपका जार है, ये आपका जार है। ठीक है, अब वही सेम एग्जांपल लेंगे, हमने अभी क्या लिया था कि एक जार के अंदर सपोज इसके अंदर क्या है 50% सी एन है, और इसके अंदर क्या है 50% वाटर है। ठीक है, अब एक जार है और एक जार है, दोनों को अलग अलग जार के अंदर हमने दोनों से ऐड कर लिया, 50% इसमें 50% इसमें। ओके, सो अब इसमें चेंजेस क्या हो गए कि ठीक है, हमें स्टडी करना है ड्रग का, तो हमें 50%, अब ये तो मोबाइल फेज हो गया, हमें अब इसमें का कॉन्सेंट्रेशन हमें सिर्फ 25% इसका यूज करना है और इसमें से 75 करना है। तो हम दोनों भी एट अ टाइम, मीन्स ये अलग जा रहे हैं, अलग जा रहे, वी कैन यूज। ठीक है, अगर हमें चाहिए कि इसमें का 30 और इसमें का 70, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का कंपोजिशन चेंज कर पा रहे हैं। हम इसमें से 30 लेंगे तो इसमें से 70 ले सकते हैं, इसमें 25 लेंगे तो इसमें 75 ले सकते हैं। सो सेपरेशन मीन्स मोबाइल फेज कंपोजिशन चेंज, आप इसमें से मोबाइल फेज का कंपोजिशन बदल सकते हैं ड्यूरिंग द सेपरेशन प्रोसेस, डिस्क्राइब एज अ ग्रेडियंट, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट इल्यूशंस। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द दिस बोथ द इल्यूशंस। ठीक है, सो the separation in which the mobile phase composition is get changed in the separation process describe the gradient. So gradient elution decrease the retention of the later eluting components,
डिक्रीज करता है रिटेंशन ऑफ द lateral eluting components so that they elute faster and giving narrow peaks. Okay, elution decrease the retention of the lateral eluting components so that they elute faster and giving narrower peaks. This also improve the peak shape and the peak height. Okay, based of the analysis, complex samples often used in method development for unknown mixtures. Linear gradient are most popular. लिनियर ग्रेडियंट क्या होता है? मोस्टली हम जो रिसर्च वर्क करते हैं हमारे इसमें लैब में, तो उस वक्त ग्रेडियंट इवोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन बदल सकते हैं। एक जगह पे हम और एक जार भी ले सकते हैं, ठीक है, और हम उसके अंदर मिथेनॉल भी ऐड कर सकते हैं। सो क्या होगा कि वी कैन स्टडी इन थिंग्स और वी कैन यूटिलाइज दैट वन इन द मिक्सचर, लेकिन एक जगह पे अगर हमने मिक्सचर कर लिया तो चेंज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज थिंग इन द केस ऑफ ग्रेजुलेशन। Okay, I hope you are getting about this one. Very important. इल्यूशन टेक्निक में आइसोक्रेटिक आइसोमेन सेम एक ही जार में हम मिक्स कर रहे हैं, और ग्रेडियंट इल्यूशन में अलग अलग जार के अंदर हम अलग अलग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट हम पुटअप कर रहे हैं और उसका हम स्टडी कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ प्रिपरेशन और स्केल ऑफ ऑपरेशंस. So analytical HPLC, no recovery of individual components of the substance. Analytical HPLC में ऐसा individual component का separation और recovery बहुत difficult है. We are get separating out, no doubt, but recovery difficult. और preparative HPLC में individual components of the substance can be recovered. तो हम क्या कर सकते हैं? Preparative में fractions collect कर सकते हैं, उसका study कर सकते हैं. Analytical में not recovery, वो possible नहीं होगा. So that is based on to the whatever the operations are there, analytical and HPLC. And based on to the analysis, that is a qualitative analysis and quantitative. Okay, so analysis of a substance in order to ascertain the nature of its, okay, chemical constituent, the nature of the chemical component or constituent. We can separate individual component but cannot assess the quantities in this analysis. ओके, और क्वालिटी तो कर सकते हैं हम, क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द proportion of its chemical constituent, so quantity of the impurities and individual component can be assessed, but impurities रहेंगे तो उसके भी इसमें पिक्स आने लगेंगे। So it can be done with the qualitative, quantitative, anything we can done in the case of this one. Okay, based on the principal separation, we know adsorption, we know ion exchange, partition हमें पता है कि लिक्विड लिक्विड के अंदर हम उसका सेपरेशन कर रहे हैं, एंड साइज एक्सक्लूसिव, अगर उसमें से साइज के हिसाब से उनका सेपरेशन होगा तो दैट वी आर आयन एक्सचेंज मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर चार्ज के इस पे आयंस के ऊपर सेपरेशन हम इसका करते हैं, ठीक है। तो दैट ऑन द बेस ऑफ दिस वन देयर इज अ सेपरेशन टेक्स प्लेस, वी हैव स्टडी इन द बेसिक लेक्चर, सो वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम इन द केस ऑफ दिस वन। सो दिस आल्सो अनदर टाइप्स आर देयर दैट वी हैव कवर। पहले हमने जो 6-7 टाइप लिए थे वो सभी के सभी इसमें आ सकते हैं, दैट इज बेसिक, बेसिक जो हमने लेक्चर लिया था क्रोमेटोग्राफी, दैट इज इंक्लूडिंग द बेसिक। ओके, एंड थ्योरी ऑफ एचपीएलसी, सो प्रिपेयर ओल्ड जीसी थ्योरी, जीसी में रेट और प्लेट थ्योरी जो हमने डिस्कस किया था वो पूरा इसमें आ जाएगा, मोस्टली रेट और प्लेट थ्योरी, और आरटी और आरवी में रिटेंशन एंड रिटेंशन वैल्यू, एवरीथिंग वी हैव टू बी फॉलो द ओल्ड वन, सो वी आर डोंट डू नॉट वेस्टिंग द टाइम इन द केस ऑफ theory of HPLC. Move towards the how to separate the components. Okay, how to do the separation of the components. So suppose here is what, uh, as I told you, here is a one solvent, यहाँ पे एक solvent है, यहाँ पे एक, ये अलग जार है, एक अलग जार है, यहाँ पे आपका पंप है, तो पंप क्या करेगा, वो यहाँ से ये फिल्टर, इनलेट फिल्टर है, ठीक है, तो यहाँ से इसको ऊपर लेगा, यहाँ पे डी गैसर सेट रहेगा तो ये डी गैस करेगा, यहाँ से पंप की तरफ जाएगा, देन देर इज अ मिक्सर, तो इधर से एक सॉल्वेंट इधर से, दोनों को मिक्स करके फिर जाएगा, हियर इज इंजेक्टर, ठीक है। इंजेक्टर क्या क्या काम रहेगा कि इसके अंदर सैंपल इनले इंजेक्ट करे, ठीक है, ये मार्किंग रहेगी ऐसी, और थ्रू दिस वन द सैंपल इज गोस, यहाँ पे चला जाएगा, एंड देन जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो ग्रुप रहेगा, देन stationary phase, the phase which remain the fixed, C18 C silica is the mostly common paper, and carries the sample through the stationary phase that and move through the columns, that is mobile phase. So this is called as the mobile phase, and this one is a stationary phase.
ठीक है। अब इसमें से हमने इसमें का सेपरेशन हमें करना है, तो हाउ दैट सेपरेशन टेक्स प्लेस, दैट वी हैव टू स्टडी इन द डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स। ओके, तो अभी हम ये सेपरेशन कैसे करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। इन दिस स्लाइड देयर इज एन हाउ देयर इज एन कॉलम। अब ये कॉलम के अंदर ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, उसमें से आपका क्या होगा, मोबाइल फेज थ्रू द प्रेशर दैट गेट ट्रेवल्स, सो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन दैट सेपरेशन। अब यहाँ पे अब हम आ गए इस स्लाइड पे, हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया, ये आपका सैंपल है, दिस वन इज योर सैंपल। और ये से ये प्लेन लाइन आने लगी, मीन्स यहाँ से सैंपल आने लगा, और यहाँ पे आपको प्लेन लाइन दिखने लगी है, दैट इज अ स्टार्ट इंजेक्शन। नाउ इट लाइन गेट इंक्रीजेस, दिस आल्सो गेट फर्दर। ओके, ये लाइन क्या हो गई है, यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। देन अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। सो देन यहाँ से यहाँ तक अब मिलने लगा है, तो यहाँ से हमें ऐसे टाइप के पिक्स स्मॉलर, अब ये कॉलम में से ग्रुप हमने ऐड कर लिया है जो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन वगैरह स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, मीन्स नाउ ग्रुप ऑफ मिक्सचर है। अब सबसे ज़्यादा जिसकी एफिनिटी रहेगी वो ऊपर रहेगा, इट इज हैविंग हायर एफिनिटी, इट इज हैविंग अ लेस एफिनिटी, तो ये क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। सो जिसकी हायर एफिनिटी रहेगी वो अपर रहेगा, जिसकी लोअर रहेगी वो डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इस स्लाइड में क्या हो गया, अब ये कंपोनेंट आप देख पा रहे हो कि ये कंपोनेंट सबसे कम वाला ऊपर रह गया, और इसकी एफिनिटी सबसे कम है तो ये नीचे आ गया। सो वी कैन एबल टू सी दिस कलर एंड दिस सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट टेक्स प्लेस। और अभी तक एक भी कंपोनेंट अभी तो इसमें सेपरेट हो गया, लेकिन ये डिटेक्टर के पास पहुंचा नहीं, तब तक इसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्राफ ही नहीं मिल रहा है। वी कैन एबल टू सी द ग्राफ, जैसे ही यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे पहुंचेगा तो हमें क्या मिलने लगेगा, ग्राफ मिलने लगेगा। ओके, सो दैट थिंग वी हैव टू बी आइडेंटिफाई। तो अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे आ गया, नाउ देयर सेपरेशन, और ये नीचे आ गया, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब यहाँ से ये कंपोनेंट अब नीचे जाने लगा है। देन जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये कंपोनेंट पहला हमें सेपरेट मिलने लगा है, और बाकी के फ्रैक्शन तो होने लगे हैं। अब ये पहले जाके पहुँचेगा यहाँ पे, ओके। तो अभी तक इसके वजह से हमें पिक मिलना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होने लगा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। अब देखो इसमें से पास हो गया है, तो हमें क्या मिला ऐसे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा पीछे नहीं आया। जब ये नीचे ऐसा चला जाएगा ना तो पिक जाके ऐसा आएगा, अगेन स्ट्रेट line, then again like this one, again like this one, again like this one. So here as per the concentration peak height is getting increases, तो उसके ऊपर हम क्या मिलेंगे, हमें सेपरेशन। अभी आपका एक ग्राफ यहाँ तक मिलने लगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक तो आपका सेपरेशन हो गया तो उसका पिक मिल गया, इमीडिएट उसके नीचे दूसरा था तो ये भी सेपरेशन होने लगा, तो ऐसे आपको सेकंड ग्राफ मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो गए तो दो पिक मिल गए और नीचे भी चले गए। अब ये थर्ड आने लगा है, तो इमीडिएटली थर्ड जैसे जाएगा तो आपको ये थर्ड वाला पिक मिलेगा। उसके बाद ये फोर्थ वाला आने लगा है तो फोर्थ वाला पिक मिलेगा ऐसा, और देन द फिफ्थ वाला भी उसके साथ इंडिविजुअली आने लगा है, तो फिफ्थ वाला भी हमें पिक ये वाला दिखने लगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा तो उसकी वजह से पिक ऐसा मिला, और दैट इज़ द फाइनल वन। तो इसकी वजह से ये हमें सेपरेशन मिलने लगा, एंड फाइनली वी गेट द 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस वन। ये छोटा था तो इसका छोटा ही पिक मिला। सो लाइक दिस वन वी आर गेटिंग द क्रोमेटोग्राम। हम इस तरह से हमें क्रोमेटोग्राफ मिलता है। हम सिर्फ एक बार फिर से सिर्फ रिकैप करेंगे कि यहाँ पे आ गया, हमने इसको इंजेक्ट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर हमें कंपोनेंट मिलने लगे, फिर ये सेपरेशन होने लगा, फिर कंपोनेंट्स ऑन द बेस ऑफ एफिनिटी, एक एक ग्राफ हमें ऐसे मिलने लगा, ठीक है। एंड फाइनली वी गेट द ग्राफ्स, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटोग्राम। Okay, so what we are doing in the case of HPLC, through this mobile phase reservoir solvent is get over here, then there is a pump, pressure pump से हम pump करेंगे ताकि आपका मोबाइल फेज ट्रैवल हो सके। देन यहाँ पे इंजेक्टर रहेगा, सैंपल इंजेक्ट करेगा, मोबाइल फेज के साथ वो ट्रैवल करने लगेगा।
कॉलम की तरफ चला जाएगा और थ्रू द कॉलम इट गो टू डिटेक्टर एंड वी गेट द क्रोमेटोग्राम एंड हियर इज द वेस्ट. सो बाय दिस वे वी स्टडी द HPLC. हम इस प्रकार से आपकी HPLC हम स्टडी कर सकते हैं. So that is in the case of what is the first lecture of HPLC. So thank you very much all of you for your patience listening. Uh, wish you a happy learning. Stay safe, stay home, and once again, thank you very much.